What we have studied in the last class? Do tell me the topic. Kingdom Protector. Yes, and what were the topics under Kingdom Protista headings? General characteristic features of Kingdom Protector. Mhm. Photosynthetic process. Chrysophytes. Then Dinoflagellates. mm, Evelinoids. And other consumer decomposer protists. yeah. The general features of fly mouse. Okay. So today we are going to start a new kingdom, which is Kingdom Fungi. Okay, and we will study about Kingdom Fungi today, its characteristics, its sexual reproduction, and its classification. Okay. So first we will start with the characteristics of Kingdom Fungi. Ma'am, can you mute the mic? It's going over there. Here. Sabha ma'am, are you there? Okay. So today we will study about Kingdom Fungi and we will start with its characteristics. What are the characteristics of Kingdom Fungi? First and foremost characteristic is that they are heterotrophic. Okay, they are heterotrophic. Heterotrophic means what? They depend on another organism to food. Yes, because heterotrophic means they cannot prepare their own food and they are depending on others for the food. Okay, and in heterotrophic they can be saprophytic or parasitic. Now they are heterotrophic. Why? Because they lack chlorophyll. So here we will write heterotrophic because lack of chlorophyll. Chlorophyll. Okay, that is they are achlorophyllous. Achlorophyllous itself means what? They are not having chlorophyll in them. Okay. And second characteristic is they are present everywhere. Means wherever they will find suitable environment for them, so they will be present. They are cosmopolitan. Therefore, they are what? Cosmopolitan. Cosmopolitan means present everywhere. Everywhere. Now the third characteristics, their suitable environment in which they would like to grow. Okay. So most suitable environment for them for their growth and reproduction and for their multiplication, that is warm and moist condition. Okay, environment or condition same, but warm and moist condition you all have seen na, somewhere it is if you are keeping bread for more than 5 or 6 days a greeny structure like develop on the bread and something. So wherever people say कि 2 दिन में या 3 दिन में खाना खराब हो जाता है या फिर एक रात भर खाना गर्मी में अगर आप छोड़ दें तो सुबह तक क्या हो जाता है वो खराब हो जाता है. क्यों? Because of the presence of these fungus in the food material. So they prefer to go where? When the condition is warm and the environment is little bit warm and somewhat warm with moisture. If they are having warm condition and along with the moisture, it is the most suitable environment for any fungi to grow. Okay. Now fourth characteristic is their body structure. So their body is called as thalloid. Thalloid का मतलब, what is the meaning of thalloid? Thalloid here is what कि जैसे like if we take example of eye. So we are able to distinguish in our body, differentiate कि yes we have one hand, 2 hands, 2 legs, eyes, nose, everything is distinctly clear. But in fungi or in body of fungi, nothing is distinctly clear. So whenever the body is not clear and not differentiated, that body is called as thalloid. Okay. So thalloid means what? Body is not differentiated. Okay, that is why they are known as thalloid. And sometimes also this thalloid, NCERT also sometimes it can be called as mycelium. Okay, minute difference is there between that thalloid and mycelium. Thalloid is what? It consists of single threads of hyphae. It consists of what? Single threads of hyphae. Single thread of hyphae. HYPHAE. Okay, so only a single thread of hyphae, just like this structure will be there. Then it is thalloid. But if this thread is not single, more than one thread are entangled. Okay, like this. If there will be more than one thread, means many thread will be there, then it will be called what? It will be called as mycelium. And one hyphae and if one thread will be there, then it will be called thalloid. And both the type of fungi are present, so body of thalloids can be called as thalloid also and can be called as mycelium also. Okay. So the next characteristics is that their main body, which is main body, the thalloid body. Okay. The thalloid body is haploid. Haploid means what? An structure will be present, and here an structure represent what? And means what? Chromosome. Like in humans or in any animals and some kinds of plants, क्या होता है कि जो chromosomes उनकी cells में present होते हैं, the chromosomes which are present in their cell, they are present in sets.
like 2n. Okay, in our human body, chromosomes are present in sets or pairs, but in fungi, the haploid means their body. The haploid body contains what? No set of chromosomes. Every chromosome occurs as single. Okay, no pairing occurs then. Now the sixth one. Pairing is not there in chromosome, understood? That is why they are called as haploid body. Now next is what? Hyphae. That's okay. Their hyphae is two kinds. Hyphae is what? Hyphae is single thread, and this thyroid structure is only called as what? Hyphae. So hyphae is what? Two kinds of hyphae are there. Aseptic, aseptate, and septate. Now aseptate will be what? The structure of aseptate will be like this. Only nucleus is present all over. So this aseptate can also be called as what? Multinucleate structure. Nucleate structure. Okay. And their septate structure is like this. Septa is present. Okay. This structure, this line is called what? Septa. And in some fungi, septa means this structure is present, which is dividing the nucleus in them. So this one is what? Septa. Septate, hyphae, and where septa is not present and it is not dividing the nucleus, so it is what? Aseptic. Okay. And in between these two septa, see a small gap is present. This small gap is called as what? Septal pore. Okay. Septal pore. So their hyphae means the hyphae of fungi contains two kinds, which is one is aseptic and other is septic. Okay. Aseptic kind is found in where? Aseptic kinds. Aseptate are found in Phycomycetes. Phycomycetes. Okay. And septate kinds are found in aseptic. Phycomycetes are kya hai? The earlier fungi, means ancient fungi. Therefore, they are what? Aseptic. And septate kind of what? They are found in Astemomycetes. Astemomycetes. Basidiomycetes. Mycetes. And Deuteromycetes. Okay. Now the next characteristics. 1 minute. Yes. So I was telling you about the septic, means the hyphae of the fungi is of two types. One is aseptate, another is septate. Aseptate is somewhat like this, where no septa is present, and septate is like this, where septa is present, and in between the septa, that is in between the division, there is a pore present, and that pore is called what? Septal pore. Okay. Now the seventh characteristic can be that the fungi are multicellular. Okay, multicellular. Every fungi are multicellular except. Exception is what? Very famous exception is there, which we used to study from almost 6th or 7th class. Do you know the name? Any one of you? Kaika, Sana, can you remember the name of one example, that one exception, which is unicellular? Okay. So each and every fungi are multicellular, but the yeast, which is unicellular. Yeast is used in many baking products, na? So yeast is what? It is unicellular. Other than yeast, every fungi are multicellular. Now next characteristic is what? Their reserve food material. Reserve food is what? Glycogen and oil. Okay, their reserve food materials are glycogen and oil. And now the most common characteristic is what? All the fungi are eukaryotic. All fungi are eukaryotic. If they are eukaryotic, means they will have every cell organelles present. Every cell organelles present, except every cell organelle will be there, but they will lack vacuoles. Vacuoles are present where? Plants will, except vacuoles. They will be having a cell wall, but they do not have the vacuoles. Okay, so vacuoles are only the characteristic of plant kingdom, so they will lack vacuole in them. Now they are a form of reproduction, so they reproduce through vegetative reproduction also, asexual method also, and sexual method also. Okay, so sexual method is absent in one of the class, that is Deuteromycetes. Deuteromycetes. Other than this class, every fungi it has the ability to reproduce to what? Vegetative, asexual, and sexual. Okay, so these are the 10 major characteristics of kingdom fungi. Now we will come to the slide. Do you have any doubt in understanding all these 10 characteristics? If you have, you can ask. Okay, Kana Faika, if you are having any doubt, you can ask from me about the characteristics. Otherwise, we will go to 1.5. Okay, 0.5. 0.5 is thyroid body, is haploid. See, if we look at the cell structure of any kingdom or any cell, okay? So every cell is what? Having a chromosome in pair. They will have chromosome in pair, but the fungi cell, means this fungi cell, if they will have this, and nucleus is present like this. So in this nucleus, whatever chromosome will be there, they will occur what? Singly. They will have single
स्ट्रक्चर। ऐसे लोग पेयर में होते हैं ना क्रोमोसोम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इस जगह जो इस थायरॉइड बॉडी है या जिनकी फंजाई का जो बॉडी होगा उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, मींस दैट क्रोमोसोम्स आर व्हाट हैप्लॉइड, दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर। जब भी पेयर में रहेगा दे विल बी लाइक व्हाट दिस वन, मींस दे विल हैव देयर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम नो। सो in this fungi this pairing will not be seen, only single chromosome. See, this is the major this okay yeah this is what characteristic of most of the organism की पेयर में प्रेजेंट like animals, organism, plant, ये क्या है 2n स्ट्रक्चर है, बट इसका fungi का chromosome structure will be what will be like this, only m. See, it is what pairing structure, it is what non-pairing. So non-pairing structure is what haploid and pairing structure will be what diploid. आप समझ में आया? Now I think you got the point. Okay. So now kingdom fungi, again we will see quickly this slide. Kingdom fungi or mycota is constituting a unique kingdom of heterotrophic organism. First point was there, they show great diversity where in morphology. So heterotrophic, they great diversity morphology and habitat, that is they are cosmopolitan. They can occur everywhere and they have great diversity as a habituation in them. Okay. So next is what fungal structure. Their fungal body is assemblage of what long, extremely fine, almost transparent thread. See this transparent thread, long and fine means very small and very thin structure is this structure is what hyphae. Okay, and numerous hyphae are twined around one another to form mycelium. See, if one hyphae is there, then only it will be what thyroid, and if two or more or three or multiple hyphae will be there, then these all structure together will be called what mycelium. I've explained this one, so you can see the structure also. See, mycelium is what? It is a group of more than one hyphae, and is in this structure it is only single thread is looking like this. So this single thread is what? It is hyphae, and group of cell is what? It is mycelium. Okay, and here you can see the zoom out structure. It is like this thread-like structure is being shown, and this thread-like structure is already also what? Mycelium. Okay, and now their nucleic and that septa and aseptic one. See, asepta, there is no line is present between them which are dividing, and here lines are present between them. और ये लाइन क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं, डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं. नाउ आल्सो later we will study two kind of septa are also present, one is primary and one is secondary. So here only I will tell about the septa. So septa are there, we have studied septa. So septa is two kinds, one is primary, other is secondary. So this primary one, we will take this primary one. Okay, so primary one are called as vegetative also, vegetative, and secondary will be called as what, reproductive also. So this vegetative ones, they have only one nucleus present in them. So only single nucleus is present, so they will only one nucleus is present, so they are what, primary or vegetative, because they are very young at this time and they are not able to reproduce. So this stage, at this stage they will call it as primary septa. But in reproductive septa, or we can say secondary septa, okay, or we can say reproductive one. So in reproductive septa, what the structure becomes like this, two nucleus will be seen. Okay, and this also I haven't drawn. So two nuclear structure will be seen, n plus n, and this occurs only when it is the time of reproduction or division. So 2n is what? It is somewhat like dikaryon. Di means two, and karyon means what? Nucleus. Two nucleus is present. That is why they are also called as what? Secondary septa. Only occurs during what? Occurs only at reproductive stage. Okay, and here it will be called what? Unikaryon. Uni means one and karyon means nucleus. Okay, single nucleus is present in this septa, so they will be called as unikaryon also, and vegetative stage, and here two nucleus will be present at the time of reproduction, so it will be called as what? Dikaryon. Okay, so explain this septa also, septic, hyphae. See, hyphae is of two kinds, aseptic and septic. Further, septic is of two kinds, primary septa and secondary septa. Primary septa includes what? It has single nucleus, it is vegetative stage, and at that time fungi are very young. Okay, and secondary septa is what? It is reproductive stage, and in this stage two nucleus will be found at every septa. Okay, so this is reproductive stage. Now we will see fungal hyphae. They are thin, tubular, transparent threads filled with what? Protoplasm and covered by wall. The fungal hyphae is of following type, aseptic and septic.
Receptive will be what? Cross walls of septa are not formed, and the cross wall of septa are formed with the nuclear division, after the nuclear division. Okay. So fungal tissues is okay. So I haven't talked about this one. Fungal tissue is formed by interweaving of fungal hyphae, which is called as plectenchymous. See, when this hyphae will be formed, when they will interweave, so a tissue will be formed, and that tissue will become what? Plectenchyma. Then they will intertwine in between them. So intertwining result in formation of a tissue, and that tissue is called what? Plectenchyma. It can be further divided into prosenchyma and zero. This one is not so important because further division it occurs very rarely. Okay. So prosenchyma is formed of distinct hyphae running together in parallel. Pseudoparenchyma, fake parenchyma formed by close packing. See, pseudoparenchyma is known is called as fake parenchyma because why? It is formed by packing of close. Close fusion is here. Here we cannot define any key where one hyphae is going. So this is what fake pseudoparenchyma. Okay. Now fungal cell. Okay, cell wall. I haven't told you about cell wall. No? The cell wall of fungus is made of chitin. Okay. This cell wall is made of what? Chitin. Fungi are eukaryotic cells. Cell wall is present on the outside and made of chitin and polysaccharide. Okay, they possess all the eukaryotic cell organelles except what? Plastids. And plastid only contains what? Vacuoles in them. Plasma lemma bears. Plasma lemma is what? It is plasma membrane. Plasma membrane has various names, and one of them is what? Plasma lemma. It bears coiled membrane outgrowth called lemosomes lying below the cell wall. After the cell wall, one extra layer is present. That layer is called what? Lomasomes. Okay, and after lomasomes means lomosome is just attached with the plasma membrane. First layer is cell wall, then lomasomes, and then plasma membrane, which is attached to this lomasomes. Okay, near the hyphal tip, cytoplasm contains small vesicle, which is cytosomes, and these contain cell wall material, food reserve. This one is important. The food reserve, which is in form of what? Glycogen and oil. During cell division, the nucleic acid may not dissolve as in plant and animal cell. Okay. So it is one of the important line कि जैसे प्लांट और एनिमल सेल में डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हो जाता है. वी विल स्टडी इन द सेल डिवीजन चैप्टर कि जब ये न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाता है, ये डिवीजन के प्रोसेस में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. बट इन दिस फंगल डिवीजन में ये न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व नहीं होता. ओके. Now nutrition is what? Most of them are heterotrophic because they do not have chlorophyll present in them. They absorb soluble organic matter from their substances, that is their saprophytes. Okay. Now they are called as saprophytes. According to their mode of nutrition, fungi are parasites or saprophytes. Okay. Now this slide is complete. Any doubt in this page? You can ask me if you have any doubt in this page, this whole page about the characteristic of kingdom fungi. Yes, Faika, do you have any doubt in them? Sana, do you have any doubt? No, sir. No, ma'am. Okay, then we are moving to the next point, which is reproduction in fungi. Okay, so reproduction in fungi. So fungi in reproduction are explained now. 3 types of reproduction are formed. So 3 kinds of reproduction. One will be what? Asexual. Yes, but first of all vegetative, then second asexual, and the third one will be sexual. Okay, now asexual, we will take vegetative ones first. Vegetative reproduction. This one is very easy. Vegetative reproduction. It includes 3 types. Further 3 types. Okay. So one is what? Wherever a fungus has to divide, they simply will be what? Fragmentation. They will follow process of fragmentation. Fragmentation मतलब क्या होता है? Simply इनका जो ये body part है ना, they have various septa present में, इसमें से कोई एक septa टूट के गिर जाएगा. Like this. ये कोई एक सेप्टा क्या हो जाएगा? टूट के गिर जाएगा. तो this septa will be form a different body and this will be what? A different body. So 2 septa हो गए. It's a kind of reproduction. Then second will be what? Fission or binary fission, we can say. Binary fission. And the third one will be what? Budding. Okay. Binary fission is what? If this body is like this one, and binary fission will try to divide. Okay, let me take some other example. So if this is the body of a fungus, okay, so they will try to divide. And the binary fission occurs like what? Their cell will stretch, and from this, take this one only. So this stretchy cell will what? Divide, and stretching will be occurring. And after this stretching, they will fall 2 hyphae. So this is what? Binary fission. And now third one is what? Budding. Budding is somewhat like this. If they have 2 different kind of structures, means they are attaching in the different hyphae, and one of this hyphae will what? Break down from here, and this will form a new body. So it will also be a kind of what? Reproduction.
So this is vegetative reproduction. Now the second one is what? Asexual reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction will involve few characteristics we will see. It takes place where? It takes place with the help of spores. Asexual reproduction will always occur with the help of spore. Okay. So takes place with the help of स्पोर्स. ओके, अब स्पोर्स भी क्या है, बहुत सारे तरीके के रहेंगे. तो कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे वो क्या रहेगा? प्लेनोस्पोर रहेगा. जिसमें फ्लैजिला नहीं रहेंगे वो ए प्लेनोस्पोर रहेगा. और फिर उसके बाद जिसमें फ्लैजिला अंदर की साइड प्रेजेंट रहेगा, सॉरी जिसमें स्पोर अंदर की साइड प्रेजेंट रहेगा, उस स्पोर को हम लोग कहेंगे इंडोस्पोर. एंड जिसमें बाहर की साइड प्रेजेंट रहेगा उसको कहेंगे एक्सोस्पोर. सो वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्स विल बी देयर. ठीक, सो वी विल टेक हियर इफ स्पोर्स आर प्रेजेंट. ओके, first we will write spores have flagella. Okay, spores have flagella. These are few terms related to the asexual reproduction. So we will call them what? Planospore. If spores don't have flagella, so they will be called what? Aplanospore. Okay, and if spores are, it means spores will be formed inside. Spores will be formed inside the body. Inside the body, so they will be called as what? Endospore. And if spores will be formed outside the body, then they will be what? Exospore. इन चारों टर्म में कोई प्रॉब्लम है? These are just terms related to spore. कि कैसे कब इसको क्या बुलाना है. इधर स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो दैट स्पोर्स we will call as planospore. If spore is doesn't having any flagella for the movement, तो उसको क्या बोलेंगे? Aplanospore. अगर स्पोर बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंडोस्पोर. और अगर स्पोर बॉडी के बाहर फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सोस्पोर. ओके, अंडरस्टूड दिस फोर टर्म. सो नाउ 3 different kind of spores are there for asexual. 3 different kind of spores are there. One is zoospores. Zoospores is what? It is forming inside the body and it is movable. So inside के लिए क्या लिखेंगे? Endospore. Okay, that is inside. And it is movable. Movable के लिए क्या लिखेंगे? Planospore. Okay, जब define करेंगे तो zoospores we will simply say zoospores are endospore and they are planospore. Why? Because they are forming inside and they are movable. Second type of spore is sporangiospore. Sporangiospore. Okay, so sporangiospores are what? They are not movable, so they will be called as aplanospore, and they also will be formed inside the body. So they are what? Endospore and not movable, so they will be aplanospore. Okay, and the third type is conidia. Conidia will be also formed what? This will form what? Outside the body, and it is also not movable. So when it is forming outside the body, then we will call them what? Exospore. And it is not movable, so aplanospore. And conidia के बारे में और ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. सो कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आया कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में कौन सा है, तो दे विल फॉर्म क्या? रिप्रोड्यूस थ्रू कोनिडिया. कोनिडिया इज मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है फंजाई का. ओके, नाउ zoospores will be formed where? Zoosporangium में. Different zoospores will be formed where? Zoosporangium. ठीक, ये स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ मिलेगा? स्पोरेंजियम में. एंड कोनिडिया कहाँ मिलेगा? कोनिडियम. ओके, एंड अभी ये पढ़ोगी कि ज़ूस्पोर किस क्लास ऑफ फंजाई का है, स्पोरेंजियोस्पोर किस क्लास ऑफ फंजाई का है, कोनिडिया किस क्लास ऑफ फंजाई में है. सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर इन देम. किसी में ज़ूस्पोर है, किसी में स्पोरेंजियोस्पोर है, किसी में कोनिडिया है. एक दो काइंड ऑफ स्पोर और अभी आगे मिल सकता है. ओके, so asexual reproduction is this way. They are having 3 different kind of spore in them, and they are dividing through their spores, and they are forming spores whether exogenously or endogenously. According to them, they are dividing themselves. Okay, now the third one is sexual reproduction. Sexual reproduction is also completed in 3 different kind of steps. Now see, अभी एग्जांपल में देखोगे कि ये जो asexual reproduction है ये मोस्टली किस में पाया जाएगा? मोस्टली विल बी एस्कोनोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस. और उनका ये फेवरेट है, समझ लो कि ये दोनों ज्यादा asexual reproduction प्रेफर करते हैं. ड्यूटेरोमाइसिटिस भी यही प्रेफर करेगा. ओके,
एंड दिस वन वेजिटेटिव विल बी मोस्ट फेवरेट ऑफ फाइकोमाइसिटीज. ऐसा नहीं कि ये तीनों नहीं करेंगे, मीन्स फेवरेट किसका क्या क्या है. फाइकोमाइसिटीज इज मोस्टली फेवरिंग दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. And is sexual reproduction is also followed by what? Ascomovans, basidiovans, but not deuteromycetes. इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है deuteromycetes में. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से यानी कि तीन स्टेप्स में होता है. एक होगा प्लाज्मोगैमी, दूसरा होगा न्यूक्लियर फिजन यानी कि कैरियोगैमी, एंड तीसरा होगा जाइगोटिक मियोसिस. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी. First is what? Plasmogamy. Plasmogamy. Plasmogamy is what? Fusion of their protoplasm. Fusion of protoplasm. Protoplasm. See, if we are taking two cells like this, so सबसे पहले क्या होगा? ये दोनों सेल मिलके अपने सेल को फ्यूज कर देंगे. मीन्स सेल फ्यूज हुआ है, अभी भी न्यूक्लियस उसमें क्या है? इंटैक्ट है. तो इनमें क्या हो रहा है? सबसे पहले सेल का फ्यूजन. दिस वन इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप. ओके, ये फर्स्ट स्टेप है. नाउ सेकेंड स्टेप विल बी व्हाट? They will their nuclear fusion will take place. Okay, the second will be what? Nuclear fusion, or we can say what? Karyogamy. Karyogamy. Okay, now अब देखो ये दो जो न्यूक्लियर है ना, ये इनका न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं. ये बड़ा न्यूक्लियस, ये लोग दोनों का न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया. न्यूक्लियर फ्यूजन ये क्या है? सेकेंड स्टेप है. न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया और ये क्या बना लिया? ये एक एन था, ये एक एन था, ये क्या बना लिया? 2n. एंड 2n इज व्हाट? जाइगोट. जाइगोट हमेशा क्या रहता है? 2n रहता है. सो आफ्टर दिस वन ये कंटिन्यू ऐसे थोड़ी रहेगा. जबकि क्यों? क्योंकि हमेशा वी हैव स्टडीड व्हाट कि फंगस का बॉडी n रहता है, ना कि 2n. तो उसके बॉडी को n बनाने के लिए, दैट इज टू मेक देयर बॉडी हैप्लॉइड वंस अगेन, देयर विल बी अकर व्हाट? मियोसिस. एंड व्हाट टाइप ऑफ मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस. क्योंकि जाइगोट बना है तो जाइगोटिक मियोसिस विल अकर. एंड वी ऑल नो कि मियोसिस से क्या रिजल्ट मिलता है? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस. सो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 different fungal cells will be formed. Each one will be having what? N structure in them. Means everyone are what? Haploid भी हो गए हैं और division भी हो गया, and this sexual reproduction also gets completed. This process is occurring what? Zygotic meiosis. This one is third step. So ये तीन step का process use करके fungal structure are dividing themselves and reproduction is occurring in fungus. Okay. So now we are coming in the slide. Reproduction in fungi. Reproduction in fungi occurs by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction क्या है? It is a part of fragment of somatic body. Separate हो जाता है, new individual को बनाता है. See, here in the figure we can see. ये क्या है? Fragmentation हो रहा है. Fragmentation is occurring. Here this one is what? Budding is occurring. And this one is what? Fission. Binary fission. फिगर से भी समझ में आ रहा है कि इनके जो ये फंगल स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि दिस हाइफी वो टूट के गिर जाते हैं तो ये एक नया बॉडी बन जाएगा और ये ओल्ड बॉडी तो है ही. और इसमें भी बडिंग में क्या हो रहा है? बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. फिर ये बड ड्रॉप आउट हो जाएगा और ये बड क्या हो जाएगा? नया बॉडी फॉर्म कर लेगा. एंड दिस वन वॉट? अपने डिवाइडिंग सेल को ही एक्सटेंड किया है, फिर एक्सटेंड करके क्या हुआ? सारा चीज डुप्लीकेट किया है. डुप्लीकेट के बाद डिवीजन हो गया सेल का. सो दिस वन इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो बहुत सारी स्पोर्स हैं. जू स्पोर्स, फाइकोमाइसिटीज में, स्पोरेंजियो स्पोर्स स्पोरेंजियम में बनेंगे, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर. कोनिडिया कहाँ बनेंगे? पेनिसिलियम में. सो देखो ये नेम राइजोपस और म्यूकस, पेनिसिलियम. यू हैव टू रिमेंबर पेनिसिलियम से क्या बनता है? पेनिसिलिन. लेटर वी विल सी. राइजोपस क्या है? ये ब्रेड मोल्ड है जो इजीली वी आर एबल टू सी, क्योंकि ब्रेड तो सबके घर में आता है तो वी कैन इजीली सी कि राइजोपस कहाँ जल्दी ग्रो कर जाता है. ओके, कोनिडियो स्पोर कहाँ मिलेगा? फाइटोफोरा में, एल्बुगो में. एल्बुगो इज कॉजिंग अ डिसीज वन. So chlamydospore is also there, rhizopus में ही. Orthospore in mucus. So these kind of spores are not that important as zoospore, sporangium, conidia one are most important. Okay, so you can see here orthospores, chlamydospores, conidiospores. See, conidia are somewhat like this. This one is one conidia. Okay, and there are different kinds of conidia also. Blastospores मतलब कि एक ही जगह पे कई सारे एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो रहा है, like a blastospores. And sporangiospore is what? कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ढेर सारे क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट है. और जब भी ये सैक टूटेगा तो क्या होगा? ढेर सारे स्पोर्स बाहर आएंगे. ठीक, सो यू कैन सी अ वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हियर प्रेजेंट इन देम. Now sexual reproduction, all the fungi reproduce asexually except artificial grouping. Means fungi imperfectly. अभी आगे पढ़ेंगे कि deuteromycetes को fungi imperfectly भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो सबसे परफेक्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है. अब जब सबसे परफेक्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नहीं प्रेजेंट है deuteromycetes में, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज fungi imperfecti. ओके, यानी कि imperfect fungi बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम. सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स उसको गैमेटेंजिया कहेंगे. गैमेट सिंगुलर में गैमेटेंजियम. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में oospores,
एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। सी एस्कोमाइसिटीज में होगा तो उसको एस्कोस्पोर बोल दिए हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में हो रहा है तो बेसिडियोस्पोर्स। ओके, एंड oospores कहाँ हो रहा है? फाइकोमाइसिटीज में। ओके, नाउ वेरियस स्पोर्स यू कैन सी। Earlier I've also taught na that isogamy means two motile cells will be there, and isogamy, one is long, one will be short. Oogamy means one is for male, one will be present, and female will be present. And gametangia means two different sides will combine with them, and then they will form a process of division. And oogonium and amphidium is somewhat like higher process. Okay, and this one is the simplest division, like fragmentation. We will see. Now this sexual cycle is plasmogamy, kylogamy, and meiosis. Meiosis will be what? Zygotic meiosis. Zygotic meiosis. Now, do you have any doubt in this page? Sexual reproduction in fungi. Anyone have any doubt in this whole page? If not, then I'll move further. Ma'am, can you explain chlamydospores again? Okay. Chlamydospores in rhizopus. See, rhizopus structures are like this. Okay. So they have in their structure chlamydia. क्यों chlamydia? क्योंकि इनके अंदर बंच जो है ना, छोटे छोटे क्या रहते हैं? स्पोर्स टाइप, जैसे कांटेदार न्यूक्लियर टाइप के होते हैं ना, तो उसमें जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस दैट बड़े न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, इन दैट इज व्हाट वी से chlamydia. एंड उस chlamydia के अंदर जितने भी स्पोर्स होंगे सैक लाइक, उस चीज को, उस स्पोर्स को हम बोलेंगे chlamydospores. ओके, आप समझ में आया chlamydospore? Yes, ma'am. Okay, so now I will come to the classification. For saving the time, I have already made the diagram of classification. So I'll just simply explain this. See, here on the basics, तुम्हें बस ये diagram याद करना है, not that separate characteristic of everyone. You just have to remember this whole table. Okay, not diagram. Sorry. So phycomycetes, देखो, एक तो क्या है, चार क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरोमाइसिटीज। फंगी की चार क्लासेस हैं। वन इज फाइकोमाइसिटीज, सेकंड इज एस्कोमोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज ड्यूटरोमाइसिटीज। एंड फाइकोमाइसिटीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज oomaicities एंड अदर इज zygomaicities। सो जो ये oomaicities हैं, इसका निक नेम है फंगल एल्गी फंजाई। फिर zygomaicities का क्या है? कॉन्जुगेशन फंजाई। And this one is sac fungi, and basidiomycetes club fungi, and deuteromycetes को imperfect fungi. अब इन सबको निक नेम कैसे दिया गया है, किस बेसिस पे दिया गया, we will study in their characteristic. Okay, so habitat में oomaicities aquatic है। See, oomaicities क्या aquatic है, algal भी क्या होती है, aquatic होती है। And cell wall oomaicities का सेलुलोज को बना होता है इंस्टेड ऑफ काइटिन। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो कि एल्गी से मैच करता है, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसका नाम क्या है? एल्गल फंजाई। ओके, सो हैबिटेट इज देयर एक्वेटिक, एंड oomaicities को छोड़ के बाकी सारों का हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल। वो पानी में नहीं दिखेंगे, दे विल ऑलवेज बी सीन एज व्हाट? टेरेस्ट्रियल। सो zygomaicities या एस्कोमो या बेसिडियो या ड्यूटेरो कोई भी ले लो, वो सारे टेरेस्ट्रियल होंगे एक्सेप्ट फॉर oomaicities। फिर देयर हैबिट मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं या कैसे रहते हैं। So this oomaicities and zygomaicities, ये लोग क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मींस दे आर कंपल्शन है कि वो लोग पैरासाइट ही दिखेंगे। एंड एस्कोमो, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो का सेपरेट है। सी एस्कोमाइसिटीज इज व्हाट? सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है एंड कोप्रोफिलस भी है। कोप्रोफिलस मींस व्हाट? ऑन द डंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो अपना फीसेस पास आउट करते हैं, उनके डंग में भी एस्कोमाइसिटीज पाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट? कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मींस ऑन डंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल डंग। फिर इसमें बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ मिलेंगे? सॉइल में पाए जाएंगे, लॉग्स में पाए जाएंगे एंड ट्री स्टम्प्स में। ट्री स्टम्प्स मतलब जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उसमें भी बेसिडियोमाइसिटीज को देखा जा सकता है। एंड दे विल बी पैरासिटिक ऑल्सो। नाउ ड्यूटेरोमाइसिटीज, सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स, मेजॉरिटी आर व्हाट? डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर्स क्या होते हैं? जितने प्लांट वेस्ट होते हैं। प्लांट वेस्ट लाइक प्लांट के छोटे स्टेम्स वगैरह हैं, प्लांट के जितने लीव्स वगैरह हैं, वो सॉइल में गिरते हैं, तो सॉइल में जो डिकम्पोज करता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उस प्लांट के वेस्ट के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट वापस से कहाँ जाते हैं? सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो इसलिए काम कौन करता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का। ओके, नाउ कमिंग टू द सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ oomaicities are made of cellulose, and except for this, all are made up of chitin and some polysaccharide. Okay, so मेनली सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है किसका? पॉलीसैकेराइड एंड काइटिन का। सारी चीजों के सेल वॉल में काइटिन मिलेगा, लेकिन oomaicities के सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा। नाउ सेप्टा इज व्हाट? फाइकोमाइसिटीज। आई टोल्ड यू अर्लियर ना, फाइकोमाइसिटीज के सेप्टेट में क्या रहते हैं? एसेप्टेट रहते हैं। एंड बाकी सारे एस्कोमो, बेसिडियो और ड्यूटेरो क्या है? ये सेप्टिक रहते हैं, मींस दे हैव सेप्टा प्रेजेंट इन देम।
अब इसमें भी देखो सेप्टा में भी क्या है, एस्कमो वाले में प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, और जो प्राइमरी वाला सेट माइसीलियम यानी कि प्राइमरी माइसीलियम मिलेगा वो लॉन्ग रहता है, मींस प्रोलॉन्ग मतलब ज्यादा देर तक टिकने वाला, या प्रोलॉन्ग रहेगा। ओके, प्रोलॉन्ग मतलब ज्यादा देर तक टिकने वाला, और सेकेंडरी माइसीलियम कम देर तक टिकता है, मींस कि ये वेजिटेटिव स्टेज ज्यादा देर तक रहेगा और रिप्रोडक्टिव स्टेज कम देर तक रहेगा। लेकिन बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है, वेजिटेटिव स्टेज जो है वो कम रहता है एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज ज्यादा देर तक रहता है। एंड ड्यूटरोमाइसीटीज में ओनली प्राइमरी माइसीलियम विल बी फॉर्म, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है इसमें, तो ये सेकेंडरी माइसीलियम नहीं रखता है। नाउ सेप्टल पोर, जब फाइकोमाइसीटीज में सेप्टा भी नहीं प्रेजेंट हो, इसमें सेप्टल पोर भी नहीं प्रेजेंट होगा, मींस सेप्टल पोर इज आल्सो एब्सेंट। अदर देन दिस सेप्टल पोर इज प्रेजेंट इन एवरी क्लासेस। फिर एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स मींस कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर कहाँ मिलेंगे, ज़ू स्पोर कहाँ मिलेगा, ओमाइसीटीज में, स्पोरेंजियो स्पोर कहाँ मिलेगा, जाइगोमाइसीटीज में, कोलेरिया कहाँ मिल रहा है, एस्कोमोमाइसीटीज में। इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, किसमें, बैसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन वेरी रेयर बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से हम लोग इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर से देख सकते हैं। एंड इसमें जब स्पोर नहीं है तो इसमें रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है। ठीक बताया ना, फाइकोमाइसीटीज सिर्फ किससे, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। देन सेक्सुअल स्पोर, अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो इससे रिलेटेड सब चीज एब्सेंट रहेगा ड्यूटरोमाइसीटीज में। स्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स, ओमाइसीटीज में देखो ओ स्पोर प्रेजेंट है जिसका जाइगोट 2n है, इसमें जाइगोस्पोर रहेगा क्योंकि ये क्या है, जाइगोमाइसीटीज है, तो इसका जाइगोट 2n। अगेन फिर एस्कोमोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर, बैसिडियोमाइसीटीज में बैसिडियोस्पोर। देखो एस्कोस्पोर में कैसे है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है, इसके स्पोर प्रेजेंट है। बैसिडियोमाइसीटीज में क्या है, ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये बैसिडिया है और इस बैसिडिया पे 1 2 3 4 इतने ढेर सारे सैक प्रेजेंट है और इस सैक के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक, एंड इन सब में स्पोर्स एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। नाउ फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, एब्सेंट है, ये पूरे क्लास ऑफ फाइकोमाइसीटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, लेकिन एस्कोकार्प और बैसिडियोकार्प में प्रेजेंट है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक, अब फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है इसलिए इसको एस्कोकार्प बोल रहे हैं और बैसिडियोकार्प बोल रहे हैं। कार्प मींस अ फ्रूट काइंड ऑफ बॉडी, और यहाँ पे एब्सेंट है। नाउ साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, सी अगेन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, तो यहाँ ड्यूटरोमाइसीटीज में एब्सेंट हो जाएगा। एंड यहाँ ओमाइसीटीज में ओ स्पोर है, जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर है। ओके, एस्कोमोमाइसीटीज में एस्कस के नाम दिया गया है, बैसिडियोमाइसीटीज में बैसिडियम का नाम, बेसिकली इनका जो क्लास है उस क्लास के नेम पे इनको नाम दे दिया गया है। ठीक, फिर मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन, डाइकैरियोटाइजेशन भी क्या, न्यूक्लियस का डबल होना, तो जाहिर सी बात है ड्यूटरोमाइसीटीज में एब्सेंट होगा, अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है तो बात ही नहीं है उसकी। फिर इसमें डाइकैरियोटाइजेशन फाइकोमाइसीटीज में भी एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें सेप्टा ही नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट है एस्कोमोमाइसीटीज में और बैसिडियोमाइसीटीज में। अब एस्कोमोमाइसीटीज में देखो किस तरह से प्रेजेंट है, ये क्या है, क्रॉसियर मेथड इसको बोला जाता है। क्रॉसियर मतलब क्रॉस का मतलब होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हुक बने रहते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, एक हुक से ऐसे हुक से ट्रांसफर होकर दूसरे न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, फ्यूज होता है, तो इसको किसलिए बोलते हैं, क्या, क्रॉसियर मेथड, हुक लाइक स्ट्रक्चर। एंड बैसिडियोमाइसीटीज में क्या रहते हैं, क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर, मींस क्लैंप क्या, एक जैसे मग का हम लोग वो पकड़ते हैं ना, होल्डिंग हैंडल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें हैंडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक, नाउ एग्जांपल्स, एग्जांपल इसका ओमाइसीटीज का फाइटोप्थोरा, क्या करता है फाइटोप्थोरा, ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में एक डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड यही लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन सम आयरिश फेमाइन, मींस आयरिश कंट्रीज में एक बार इसके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से पोटैटो की बहुत सारी कमी आ गई थी, जिससे क्या हुआ था, फेमाइन यानी कि भुखमरी हो गई थी, तो इसको बोलते हैं आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन किस वजह से हुआ था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से, मींस कॉज्ड बाय अ फंगस। सेकेंड एग्जांपल इज एल्बुगो। एल्बुगो क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जहाँ की जो कि किस पे रहता है, मस्टर्ड में प्रेजेंट रहता है। मस्टर्ड इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ वेजिटेबल और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी मिलता है, ये खाने की चीज भी है, तो मोस्टली क्या होता है, ये भी बॉडी के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। एंड ये भी, इसको एक पहले मस्टर्ड का जो फैमिली था वो क्रेसिकेसी बोला जाता था, सॉरी क्रूसीफेरेसी बोला जाता था, तो इसीलिए इसको क्रूसीफर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज भी बोलते हैं। ओके, नाउ example of what, zoomaicites, mucor rhizopus. Rhizopus, you have to remember this famous name, bread mold. Okay, it is found in what, found on bread. Now here ascomycetes includes yeast, most important and most famous example. Okay, yeast is what, it is unicellular, एक पहला फीचर है। फिर yeast का जो अंदर, yeast के अंदर भी बहुत सारे क्लासेस हैं, उसके अंदर जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, मींस इसका फुल फॉर्म भी आएगा आगे 12th में। सो सैक्रोमाइसिस क्या होता है, यूज होता है कहाँ, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में। सी
ब्रीविंग इंडस्ट्री में जहाँ अल्कोहल वगैरह बनता है उसमें भी सैक्रोमाइसिस का यूज होता है, एंड बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ बेकिंग का काम होता है वहाँ पे भी ईस्ट का यूज होता है। सी, जब भी हम लोग को कोई चीज फर्मेंट करना होता है वी आल्सो यूज ईस्ट इन आवर होम। तो ईस्ट इज व्हाट, इट इज बेकिंग। एयर फोर्स डेवलप कर देता है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को उठा देता है, उसके अंदर एयर डेवलप कर देता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, बेकिंग। नाउ सेकंड एग्जांपल व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज व्हाट, ब्लू ग्रीन मोल्ड, क्योंकि इसका जो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक व्हिच इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन। तो जो एंटीबायोटिक का नाम है वो क्या है, पेनिसिलिन है। ठीक, नेक्स्ट इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा किस मामले में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हो रहा है आजकल जेनेटिक और बायो इंजीनियरिंग काम के लिए। न्यूरोस्पोरा कैसा, इसका फुल साइंटिफिक नेम है, एंड इसको अभी भी ड्रेसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ये प्लांट किंगडम में पूरी चीजें थी, तो इसलिए अभी भी इसको प्लांट किंगडम और ड्रेसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जा रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज क्लैरिसेप्स पर्प्यूरा। ये ऑल्सो भी क्या है, ये एक फॉर्म है किसका, एडिबल फॉर्म है फंगस को खाने का। सी, तो एडिबल फॉर्म में क्या आ सकता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल्स क्या होते हैं, बहुत प्रोटीनिशियस होते हैं एंड हाईली मतलब कॉस्टली भी होते हैं। किसी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगी ना, फेमस रेस्टोरेंट में, सो सम व्हाट दे विल सर्व morels and truffles. These morels will be can be seen in some pasta dishes also. So these two are what, highly proteinaceous हैं, highly proteinaceous, and that is why what they are very costly also. Claviceps purpura ये क्या है, used होते हैं as a edible form of fungus। ठीक, now we will come to Basidiomycetes। ठीक, Basidiomycetes में बहुत सारे एग्जांपल है, you have to remember puff ball, again puff balls is there, bracket fungi is there, their structure will be like somewhat as bracket की तरह, इसीलिए इनको बोलते हैं bracket fungi। ठीक, tooth stools, agaricus is very important for you to learn। Okay, agaricus is what, it is also a kind of eatable fungus। eatable fungus agaricus is what, mushroom include किया जाता है, इसका ऐसा रहता है agaricus। तो इसका ये वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं ना, इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ठीक, ये पार्ट खाया जाता है इसलिए इसको बोल रहे हैं बेसिडियोकार्प। दिस वन इज द पार्ट। This is rust fungi, what, Puccinia, and smust fungi, Ustilago। So in this agaricus and puff balls, bracket NCERT में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं बेसिडियोकार्प के, इसीलिए ये सारा मैंने लिख दिया था। Now Deuteromycetes Alternaria solani, ये क्या है, लेट ब्लाइट। एक क्या कर रहा था, फाइकोमाइसिटीज में अर्ली ब्लाइट कर रहा है, सॉरी लेट ब्लाइट कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, मतलब पोटैटो में पहले ही उसके क्या कहते हैं, बनने से पहले उसमें खराबी ला रहा है। ठीक है, और ये फिर second example is Coleotrichum, red rot of sugarcane, and third example is Trichoderma। So these are all 4 different classes of this fungus। Do you have any doubt? I'll just straight away read this one because every characteristics are written there। So you can see the further example here in this chart। And Phycomycetes क्या है, they are members of Phycomycetes and aquatic habitats भी रहते हैं, decaying woods में भी पाए जाते हैं, damp places में भी पाए जाते हैं, obligate parasite भी। ठीक, फाइकोमाइसिटीज को फर्दर बताया ना, 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, तो दोनों का एक साथ लेके बताया गया। माइसीलियम क्या है, एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है। हाइफिल वॉल क्या है, माइक्रोफाइबर्स है, सेलुलोज काइटिन का भी है, सेलुलोज का भी है, दोनों ही है। मेनली क्या 90% ज्यादातर सेलुलोज के हैं, काइटिन वाले बहुत कम दिखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, इंडोजिनस है, फॉर्म्स ऑफ क्या है, स्पोरेंजिया है। ज़ूस्पोर्स भी बनेंगे, ज़ूस्पोर किसमें बनेंगे, ज़ाइगोमाइसिटीज में। एंड गैमीट्स विल बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो जब मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एनाइसोगैमस और ओगैमस। डिसीज क्या है, एल्बुगो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज वन important one, and downy mildew, this one is only important, you have to remember this late blight one। Ascomycetes क्या है, member of Ascomycetes they are commonly called as sac fungi, क्यों, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ऐसे sac like स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर जो सारी चीजें प्रेजेंट होती है इसीलिए sac fungi। फिर मोस्टली क्या है, मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलियम, एंड रेयरली यूनिसेलुलर यानी कि ईस्ट। ओनली यूनिसेलुलर विल बी फाउंड एज ईस्ट। कॉमन फीचर्स क्या क्या है, टेरेस्ट्रियल है, सम आर एक्वेटिक आल्सो। देन माइसीलियम क्या है, ब्रांच है, एंड सेप्टेट है। ये सिर्फ 1 या 2% ही तुम्हें दिखेंगे, 1 या 2% एक्वेटिक दिखेंगे, बाकी 90%, 98% to 99% तुम्हें क्या दिखेंगे, टेरेस्ट्रियल दिखेंगे। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, एंड कॉप्रोफिलस मींस ग्रोइंग ऑन डंग। Asexual spores are what, Conidia। फिर sexual spores क्या है, ascospore, क्योंकि ascomycetes में है। Sexual reproduction occurs by gametangial contact, formation of oospores। See, gametangial contact is what, like this। एक गैमेट यहाँ थे, इसका पूरा बॉडी, फिर एक गैमेट यहाँ था, इसका पूरा बॉडी, ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, फिर ये रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। इन एग्जांपल में पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड ईस्ट, ऑल 4 और 5 आर इंपॉर्टेंट। ठीक, ईस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा बायोटेक्निक में यूज होता है, क्लैविसेप्स एडिबल फंगाई है, एस्परजिलस भी क्या है, एडिबल फंगाई है। Basidiomycetes, sorry, aspergillus is not edible one। Basidiomycetes terrestrial,
सैप्रोफिटिक पैरासिटिक फॉर्म है। माइसीलियम क्या है इनका, ब्रांच और सेपरेट है। एसेक्सुअल स्पोर क्या है, नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। सेक्स ऑर्गन क्या है, एब्सेंट है, लेकिन प्लाज्मोगैमी अकर्स होता है, क्यों, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट क्या है, स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप। उसके बाद कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस होता है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट है। एंड एग्जांपल्स में एगारिकस हो गया, पक्सीनिया हो गया, उसके लैबो हो गया, ब्रैकेट फंजाई, ओके। ड्यूटरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई कॉमनली बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है, सेक्सुअल एब्सेंट है एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। सम फ्यू ऑफ देम ओनली एक्वेटिक हैं। माइसीलियम क्या है, सेपरेट है, ब्रांच है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है किससे, कोनिडिया से। एंड सेक्सुअल सर्टेन नहीं है। माइसीलियम स्ट्रक्चर कोनिडिया इंडिकेट करता है क्या, कि ये ड्यूटरोमाइसिटीज बिलोंग करते हैं कहाँ, एस्टोमाइसिटीज। ठीक, मतलब कि ये जो ड्यूटरोमाइसिटीज है वो इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, एस्टोमाइसिटीज से इवॉल्व हुए हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, so this up to here, do you have any doubt? Kingdom fungi, reproduction, classification. Do you have any doubt in the whole lecture? Sana, are you having any doubt in whole lecture? No, ma'am. And Farka, what about you? No. I'm keeping my lecture up to here today, and now it's